फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज हम लोग कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू मेक बॉडी स्क्रब और वी कैन से शुगर स्क्रब। सो इसके लिए हमें मेन 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। उसके अलावा आप फ्रेग्रेंस और कलर वो सब ऐड कर सकते हो। मैंने कलर ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने फूड कलरिंग या कुछ ऐसा ऐड किया एंड व्हेन यू आर बेथिंग, imagine the whole color on your body. It would look so weird. So we are starting with normal ingredients. So पहले है sugar हमें grind करनी पड़ेगी and I don't want to make noise, so I've thought of taking sugar and crushing it. So यहाँ पे मैं 2, 3 and half. So यहाँ पे मेरे को ज़्यादा लेना नहीं था because when you add all the ingredients it turns out to be more than you expected. So इसलिए I'm just taking a little bit of sugar, that is 3.5 spoons sugar for both together. I'm going to make 2 types of scrub now. So guys, it looks like I'm literally bursting crackers and it's so satisfying. Finally guys, so मैंने इसे बिल्कुल पाउडर में नहीं बदला, मैंने थोड़ा सा दानेदार रखा है as you can see, and मैं बाद में इसका डबल करूँगी. So let's add half of the quantity to both the containers. Guys, it's totally up to you about the quantity and all. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं मतलब दोनों में इक्वल चाह रही हूँ because I don't want any ऊंच नीच. So done. There we go guys. Now first of all I'm going to take coffee for one of the bowls. So I'm going to take a spoon and half spoon coffee. Guys, be careful while adding it. And जैसे आप मेरे ख्याल से जो मैं सजेस्ट करती हूँ, हालांकि आई हैव ऑलरेडी ट्राइड इट वंस सो आई नो दैट इट्स टोटली unharmful, but still I suggest कि आप पहले थोड़ा सा बनाकर देखिएगा and if you think that it's good then you can make more. So मैंने हाफ स्पून कोकोनट ऑयल भी ले लिया, जो आप देख सकते हो बिल्कुल जम चुका है and it's looking more like a coconut dough. So there we go. Now I'll take some honey. So guys, मैंने लेने से पहले स्पून और हाथ दोनों को धो लिया because it was very very messy and I did not want my honey to literally taste and smell like coconut and coffee. So I'm mixing it a little bit. Now there. So I have half a spoon of honey in here. There we go. There. Oh my gosh guys, this is very satisfying. Guys, it
smells a little weird क्योंकि आपको literally सारी चीज़ों की smell आएगी, सारी, like every ingredient you have put in it. So you can add a fragrance to it, which I will be adding because I don't want to smell, because we all love fragrance. Now time for some now half a spoon of shower gel, or we can say body gel. It has closing problems, guys. Something like this it's looking like. Yikes, you. It feels very sticky when you do this, so it's gonna कम से कम 2 मिनट तक, कम से कम 2 मिनट तक मिक्स करना है. ज़्यादा क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम, बट इफ़ यू हैव लेस क्वांटिटी सो मिनिमम 2 मिनट. तो गाइस मैंने लास्ट में इसमें थोड़ी, मतलब जो था मैंने उतना ही और ऐड कर दिया ना, सो इट्स अ लिटिल टू मच बिकॉज आई लाइक इट. नाउ टाइम फॉर माई फ्रेगरेंस. सो मैं इसको थोड़ा नेचुरल फ्रेगरेंस देना चाहती थी, तो मैंने लाइम फ्रेगरेंस यूज़ की है. एंड इट्स टोटली अप टू यू. You can choose whatever perfume you want. A little perfume, like 1 or 2 sprays. जैसे मेरे कम क्वांटिटी है, so I'm taking 1 or 2 sprays. And if you have more quantity, you can use more. I'll be needing more. So guys, आप एक बार स्मेल करके देख लीजिएगा कि आपकी फ्रेगरेंस आ रही है या नहीं. Smells good. Now let's move to the coffee. So कॉफ़ी में मैं थोड़ी सी, मतलब मैं मिक्स करने से पहले ही फ्रेगरेंस ऐड करूँगी. That's it. Mix. Guys, smell is unpredictable. I can't guess what it is. It's kind of like the same one I had in the other scrub, but it just includes coffee in it. You, yikes. Guys, we are done with making the scrubs. Now time for applying. So इसका texture कुछ ऐसा है. I'm gonna take this much and I'm gonna apply it here. Feels like a normal scrub. And I'm gonna take the coffee scrub in this hand. Oh, it's so weird. Looks like a foundation, guys. So you can see how it's looking. Time to wash my hands. I'm back,
guys, and it really works, guys. It's way too soft. So guys, I guess you can use these. They're like pretty nice, and this is what the color looks like. Now I'm gonna store them in some small boxes. Bye guys, I hope you like this video, and let's see what I'll bring with in the next video. Bye.